Welcome guys, I hope you're well. Welcome back to my channel. I've got this gorgeous bridal tutorial for you today, and this tutorial will be in Urdu and in English. गाइस आपके लिए ये ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। बहुत ज़्यादा टिप्स हैं बेस को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाना है, कैसे आपने सेट करना है, सारा कुछ। एंड ये काफ़ी लंबी वीडियो है, आई एम सॉरी, लेकिन हर चीज़ को मेरा दिल था कि एक दफ़ा सही तरह आपको एक्सप्लेन करके दूँ। आगे से शायद मैं थोड़ी सी वीडियोज़ अपनी शॉर्ट कर दूँ, फिर उसमें थोड़ी सी लेस इन्फॉर्मेशन मतलब होती है, जो जैसे मैं आपको हर चीज़ मतलब समझाती हूँ ना, वो थोड़ा सा फिर कम हो जाता है। सो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखें एंड इसमें बहुत ज़्यादा टिप्स भी हैं, सो आप प्लीज़ देखते रहें। सो पहले मैंने यहाँ पे आईब्रोज़ पे ये आजकल ट्रेंड चला हुआ है जहाँ पे आप सोप अप्लाई करते हैं, ब्राउज की जो हेयर होते हैं ना ऊपर लेके जाते हो थोड़ा सा, एंड अच्छा लगता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ओवर भी लगता है कई दफ़ा। लेकिन इस दफ़ा ट्राई किए थे, प्रोडक्ट का नाम मैंने लिखा है, तो इससे मैंने किया था। एंड देन थोड़ा सा यहाँ पे आईब्रो जेल लगाई थी इसको शेप देने के लिए, एंड काफ़ी अच्छे लग रहे थे एक्चुअली, और उधर ही सेट थे, मतलब हिलेंगे बिल्कुल नहीं। So I decided to start off with the eyebrows, and I've used the product, the Go-To-Be glue product for eyebrows, because these days the soap brows are in and things like that. So I thought I'd give this a try because my friend had it with her. So I applied it, and it's quite your eyebrows won't move basically, and it was a little bit difficult to work with. So I applied it first, and then I'm applying some gel eyeliner now just to shape the eyebrows on the, from the middle to the outer corner, not on the inner corner. And then I'm going to tidy them up. Now this tutorial is really detailed. I'm going to go through absolutely everything I do, so you guys, obviously I know it's a little bit long, but in future the videos might be a little bit shorter, so I just wanted to give you all the tips and tricks and tell you exactly how I set the base and go through everything in lots of detail. So please do watch, do let me know what you think in the comments as well. So I've gone in with my P. Louise base, and I've applied this onto the base of the eye and around the eyebrow. सो एक फ्लैट ब्रश से मैंने पी लुइस का बेस लगाया। यहाँ पे आप कंसीलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेस की इतनी वो नहीं है कि बेस ही होना चाहिए ये वाला। एक फ्लैट ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ, पैटिंग मोशन से अप्लाई करके, तो इसको लगा के एंड देन इसको डैब करके फ्लैट कर दूँगी, ब्लेंड कर दूँगी। सो ऐसे आपका जो आईब्रोज है उसकी शेप अच्छी आ जाती है, एंड आपका जो आई शेडो है वो आपका हिलेगा नहीं, वो सेट हो जाता है, एंड उसकी जो कलर की डेप्थ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। So once I've applied my concealer, my P. Louise base, what I'm doing is just using a clean fluffy brush, and I'm tapping away, taking away all the extra product, and really kind of like making it nice and smooth, and just the edges, any harsh edges I'm getting rid of, just because I don't want them when I apply my base. So यहाँ पे मैंने fluffy brush से मैंने उसकी blending कर दी है, क्योंकि कोई harsh lines नहीं हो ना। पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये ब्राउन सा शेड, यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं इट्स लाइक अ स्मोकी आई, और बीच में गोल्ड होगा। सो इसको स्पॉटलाइट भी बोल सकते हो, लेकिन इतनी वो शार्प नहीं बनाई हुई, काफ़ी सॉफ्ट सा है। सो आउटर कॉर्नर पे मैंने जो वो कलर अभी दिखाया, आपने कोई लाइट सा ब्राउन सा इस्तेमाल करना है आउटर कॉर्नर पे और इनर कॉर्नर पे। अभी आगे मैं थोड़ा सा स्लो क्लिप पे भी दिखाऊंगी। डैबिंग मोशन से मैंने इस प्रोडक्ट को लगाया दोनों साइड से कि कलर आ जाए, एंड देन बीच में थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ, बीच में आपको गैप भी नज़र आ रहा होगा। So I'm starting off with the P. Louise palette, and I've taken like a brown color, and what I'm doing is, this is like a spotlight, or like a it's just not a very sharp look, so in the middle I'm going to have some gray, some gold. So on the outer corner and on the inner corner, I'm using a fluffy brush, and I'm stamping on the color because I just want to get the color payoff. So on the outer corner and the inner corner, I'm stamping it on. And once I've got my color payoff, I join them both together, connect them in the middle at the top, and just blend it out a little bit. So that's just giving me the base for the eye now. सो आपको नज़र आ रहा होगा एक फ्लफ़ी ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले टैप करके कलर लगाती हूँ, उसको स्टैम्पिंग मोशन से कलर आ जाता है, फिर थोड़ा सा हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ, ये मेरी प्रॉपर ब्लेंडिंग नहीं है। फिर इनर कॉर्नर्स पे भी लगाऊंगी, फिर मैं टैप करके अपना कलर लेके आ रही हूँ, एंड देन इनको ऊपर से थोड़ा सा कनेक्ट कर दूँगी ब्लेंडिंग करके। बीच वाला हिस्सा ओवैसी थोड़ा सा खाली रह रहा है, क्योंकि वहाँ पर मैंने अपना गोल्ड अप्लाई करना है। तो ये आपने बहुत टाइम लगा के आराम से इसको करना है, आपने इसको ब्लेंड करना है, फिर आपकी आई की शेप अच्छी आ जाएगी, एंड कलर भी आ जाएगा।
So I took this next color to actually deepen the outer socket areas, but it was a little bit light, so then I went in for the slightly darker color that's with it. So on the outer corners now, same place where I put the first color, but slightly lower now. So I'm going to add in my darker color on the outer corner and the inner corner, and then I'm just going to blend these out. So I'm just tapping it in, getting a bit of color, but then slightly blending it out as well. And then the effect of this just looks really nice once the eye makeup is finished. So you can see I'm just tapping on my colour. I had a bit of extra product there, so I've just wiped that off on the back of my hand, because when I'm blending I don't want it to go everywhere. And I'm trying to keep my brush in that area and really blending that out. सो अभी मैंने डार्क कलर लिया है आउटर कॉर्नर पे एंड इनर कॉर्नर पे, फिर दोबारा मैं ये प्रोडक्ट लगाऊंगी, लेकिन जहाँ पे हमने ब्लेंडिंग की है उससे थोड़ा सा नीचे आके, सो इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऊपर वाला कलर थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होना चाहिए। सो आउटर कॉर्नर पे पहले लगाया है, फिर इनर कॉर्नर पे अभी लगा रही हूँ, और ब्लेंडिंग ब्रश से कर रही हूँ। आप पैकिंग ब्रश से भी कर सकते हैं, जैसे छोटा फ्लैट ब्रश होता है, लेकिन वो आपका कलर कई दफ़ा ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर ब्लेंडिंग में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। सो अभी मैं सिर्फ आउटर एंड इनर कॉर्नर्स में लगा रही हूँ, एंड देन साथ साथ उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँगी। सो सिर्फ साइडों से ब्लेंड किया हुआ, इसको मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं किया हुआ। सो हल्के हाथ से आपने अब इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देना है कि कोई हार्श लाइंस ना रहें। साथ साथ मैं बार बार मतलब ना जो पहला कलर होता है वो दोबारा लगाती हूँ। वो हर चीज़ मतलब मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकती, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये भी लंबी है मुझे पता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके सारे स्टेप्स दिखा दूँ। यह पहला कलर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कि इसकी ब्लेंडिंग सही हो जाए। आउटर जो डार्क किया है ना, वो आपका सिर्फ मतलब हल्का सा नज़र आना चाहिए, इतना नहीं जैसे अभी नज़र आ रहा है। So now I'm just using the very first colour just to blend out the harsh edges. Now I do go back and forth a lot. Now if I start showing you absolutely everything I do, it's going to be really difficult and the video is just going to be really long. So even though this video is still too long, but I just want you to see the steps, because if I don't show you the steps and if I just move on quite quickly with the video, you won't realise what I keep doing. So now I've gone back in like with a darker colour. So just things like that, I really wanted to explain to you guys that you have to keep doing that to get the blend and the colour payoff that you want. It doesn't just happen with that one or two swipes that you see in a lot of videos. There's a lot more that's happened in between to get to that stage. So यहाँ पे फिर दोबारा अभी मैंने सॉकेट एरिया को डीपन कर रही हूँ। बस ये एक्सप्लेन कर रही थी कि अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूँ तो आपको शायद लगेगा कि वो एक ही दफ़ा मैंने किया था एंड देन बस आई मेकअप मतलब अच्छा हो गया है, कलर आ गया है, सारा कुछ है। लेकिन बीच में पता नहीं कितनी दफ़ा मैंने ये किया होगा कि इसकी डेप्थ आ जाए और ब्लेंडिंग सही हो जाए। सो बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारा कुछ दिखा लूँ। अब ब्राउ के नीचे मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर इस्तेमाल किया है, ये डॉल ब्यूटी का हाइलाइटर है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी हाइलाइटिंग देने के लिए। So I'm using a flat brush here and I'm just highlighting under the brow bones, just very small amount of product here. I'm using a flat brush. I think this one's from P. Louise, I think, or it might be Peaches and Cream. It's just a flat synthetic brush and I'm just applying this under the brow bone. So next I'm just going in with this gold from MAC. It's the Dazzle Shadow. It's a gold one. So you can use a brighter gold here if you wanted to, but I just went in with this slightly dull gold. So ये पिगमेंट है आई शेडो मैक का, ये मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप थोड़ा सा लाइट सा थोड़ा सा ब्राइटर गोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन मुझे पता था कि मैंने ग्लिटर ऐड करना है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी कि इतना ब्राइट भी गोल्ड करूँ, ये मैंने यूज़ करना था। So the first product I'm using is the Dazzle Shadow Liquid from MAC. I absolutely love this product. I've used it in another video as well. So I've just added this in straight onto the eye, and then I'm just going to use my finger and blend it out a little bit. You can use a brush, but I just find using my fingers is a lot easier. So what I've done is I've added it on, but you have to build this up, okay? So now I'm going in. So once I've blended it out with my finger, I'm just, like the edges, I'm just blurring those out a little bit, and then I go back in with a bit more colour. तो यहाँ पे मैंने मैक का ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, फिंगर से ही लगा रही हूँ, एंड देन बीच में लगा के फिर इसको मैं थोड़ा सा पैटिंग मोशन से ना इसको ब्लेंड कर रही हूँ, एंड थोड़ा सा मतलब बिल्कुल मिडल में नहीं चाहिए, थोड़ा सा आइदर साइड पे भी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। बीच में जब थोड़ा सा सूख जाता है फिर मैं दोबारा लगाती हूँ,
एंड देन इसकी वो जो फिनिश है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आ रहा है कि आ रही होगी। एक ही दफ़ा आप ज़्यादा प्रोडक्ट लगाओगे तो वो सूखेगा नहीं, वो जब आइस खोलेगी सारा फैल जाएगा, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी। फिर मैं थोड़ा सा ब्रश पे लेके जा रही हूँ एंड इसके ऊपर फिर थोड़ा सा ज़्यादा लगा रही हूँ, क्योंकि इससे ब्लेंडिंग हो जाएगी। बीच में थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, साइडों पे थोड़ा सा हल्का मुझे ब्लेंडेड चाहिए, तो इस ब्रश के साथ ये हो रहा है। So then I'm just using a brush now. I've gone back in with a little bit more product, and what I'm doing is I want the majority of the gold to be in the middle of the eye, but then I want it to kind of like bleed outwards slightly. So that's what I'm doing there. So that's why I used a brush. So as you can see, it looks really, really stunning. And what I'm doing now is just making sure that the outer corners are blended out and into the gold a little bit. I hate it when you put glitter on and you don't blend in and you've just got a blob of glitter in the middle. So you've got to make sure you do this step. तो यहाँ पे मैं आउटर कॉर्नर इनर कॉर्नर्स को ब्लेंड करके गोल्ड में थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ। जब आप बीच में सिर्फ ग्लिटर लगा देते हो और उसकी ब्लेंडिंग नहीं करते किसी भी कलर के साथ, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। सो इसको हल्के हाथ से बस मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी। अभी भी गोल्ड मैंने ग्लिटर लगाना है, लेकिन ये अभी बीच का हिस्सा हो गया। यहाँ पे अभी मैं अर्बन डिके का ग्लिटर ले रही हूँ। अगर ये आपके पास नहीं है, अगर आपको ये मिल सकता है, सीरियसली ये सबसे अच्छा ग्लिटर है। अभी ये मैंने लगाया एंड ये उसकी अपने वॉन्ड से ही थोड़ा सा लगा रही हूँ। इसको भी आपने ड्राई होने देना है। अच्छा, आपने एकदम ज़्यादा नहीं लगाना, इसको ड्राई होने दें, फिर उसके बाद आप दोबारा फिर लगा लें। एंड इसकी मतलब जो फिनिश होती है ना, इसका जो ग्लिटर है, इट्स रियली रियली नाइस। So I'm using the Urban Decay glitter here. Now if you haven't got this in your kit, I would really, really recommend you have this in all the colours, because this one is amazing. I've had it for years now. So I've just applied it on. You don't want to apply too much straight away. What you want to do is just build it up. So I've applied it, I'm letting it dry, and then I'll go back in and add a bit more. That's how you build up your glitter. You don't go in straight away with lots of glitter. So now I'm just going in with a black. I just wanted to smoke out the eyes a little bit. So I'm just going right along the lash line, and then I'm just going to pull this out a little bit. So this just stays on the lash line for me. So I'm not going in with any liquid glitter at all. सो आजकल यहाँ पे थोड़ा सा स्मोकीनेस चला हुआ है, लेकिन वो भी आई शेडो के साथ, आई लाइनर के साथ नहीं। सो आई लैश के बेस पे बस थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि एक स्मॉल ब्रश के साथ आई शेडो लगा रही हूँ ब्लैक कलर का, एंड देन इसको थोड़ा थोड़ा करके ना इसको ब्लेंड कर दूँगी। एंड देन जब आई लैशेज़ वगैरह अप्लाई करूँगी तो वहाँ पर एक बेस आपकी एक बनी हुई होती है। सो इसको आपने बस थोड़ा सा ब्लेंड कर देना है। Okay, so I bought these eyelashes from Amazon and I really wanted to try them out because they look really nice. They're really cheap. I am going to link them in. I can't remember how much they were. I think maybe £8 for about 20 lashes or something. But I just wanted to try them out because I thought, you know, I'm going to see what they're like. And they were really, really nice. I really like them. You know, because lashes can be between, you get them for £5-6 going up to about £25-30. And sometimes when I've paid a lot of money, I've not been that impressed with the eyelashes, and I just wanted to try these out on a full-on bridal that I've done, and they were really, really nice, seriously. So I will link them in the description as well, so you can see where I got them from. They're just packed a bit weird, so they're packed kind of like opposite each other, opposite like the entire box, so you just have to figure out which one goes with which. Anyway, I've applied a black eyeliner now just to the waterline, and I'm just creating that slight point as well. सो आई लैशेज़ मैंने दिखाई, मैंने अमेज़ोन से ली थी। ये अमाउंट में कहा शायद 8-9 पाउंड की ये 20 लैशेज़ थी, ये समथिंग लाइक दैट। तो मैं लिंक लिख दूँगी, क्योंकि आई लैशेज़ इतनी महंगी महंगी आपको मिलती है। मैंने कहा चलो ये सस्ती वाली ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। बस थोड़ा सा है मुश्किल कि इसकी जिन्होंने जो पैकेजिंग की हुई है ना, वो थोड़ी सी अजीब टाइप की है। जो पैर है ना वो साथ साथ नहीं है, मतलब एक कोने में है, दूसरा ऑपोजिट कोने में है, तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। एनीवे, आई लाइनर मैंने लगा दिया है, फिर मैंने विटामिन सी लगाई है। प्रिपरेशन जो स्किन की होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी आपको नज़र आ रहा है कि पिंपल्स भी हैं, थोड़ी सी डिस्कलरेशन है, पिगमेंटेशन है, तो वो सारा हम कवर करेंगे। अब काफ़ी हैवी बेस कर रही हूँ, तो ओबियसली उसका जो प्रिपरेशन होती है आपको काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। और आपने बीच में हर ये जो प्रोडक्ट आप लगाते हो ना, उसके बीच में आपने थोड़ा सा टाइम देना है कि वो प्रोडक्ट जज़ब हो जाए। फिर मैंने आई क्रीम लगाई है, ज़रूरी नहीं है आप ये वाली लगाएं, आप कुछ भी लगा सकते हो। सो skin prep is really, really important. So this time I thought I'd show you exactly what I'm doing. You can see there's pigmentation, there's a few pimples and things like that. So we need to cover it up, and I am doing a full-on base. So I use a vitamin C cream. I'm using the Ola Henriksen, I think it is.
and then I used the vitamin C eye cream, and then I'm going in with my sun cream. So these are the steps that I do on everyone, but sometimes I miss these points out because just to shorten the video a little bit. But I thought I'd show you exactly how I'm doing it, because this makes a really, really big difference. If you don't do these steps, the way the skin takes to the makeup is different. So obviously skin prep, as much as you can do it, it really will make a difference if you take that slight time out. So उसके बाद मैंने सन क्रीम लगाई थी, एंड देन मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था. सो दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली सन क्रीम इज़ सो इम्पोर्टेंट. फिर अभी मैंने यहाँ पे नया प्रोडक्ट यूज़ किया है. ये है मेकअप फॉरएवर का मैंने नया पैलेट इस्तेमाल किया है. एंड ये उनकी जैसे जो स्टिक फाउंडेशन है ना पैलेट में, तो उसके अंदर जैसे ये ब्राउन सा कलर था, तो ये मैं करेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ आइज़ के नीचे जहाँ पे मुझे डार्कनेस नज़र आ रही है. एंड दिस सीरियसली मेकअप फॉरएवर का पैलेट बहुत ज़्यादा नाइस. आई थिंक बाद में आपको नज़र भी आ जाएगा कि कौन सा इस्तेमाल कर रही हूँ. So I'm using the Makeup Forever, I think it's called Essentials palette, and this comes with 6 blushes, I think it is, and 6 or 8 foundations. So I'm using, so these are the stick foundations into a palette, and I'm using like a dark brown one just to color correct, and I love this palette. I fell in love as soon as I used it. I fell in love. I've always liked the HD foundations and from Makeup Forever, but for a while I've not ordered them, and this palette I've been eyeing up for a while, and finally I bought it a few weeks ago. So I've color corrected with that. So I'm color correcting all in the areas that I feel there's a bit of discoloration or you know, pimples and things like that I just want to cover up. Then I'm matching up my foundation, deciding on what stick foundation to use. So I've gone with the Kryolan, and I've used the FS45. So again, I am painting this on extremely heavily now, all over the face, down the neck area and everything. Now my bride actually had tattoos as well. You've probably seen those, so I wasn't trying to cover those up as such or anything like that, so I didn't go very heavy onto the neck area or anything like that. Otherwise I could have done if I wanted to, but I was fine with them showing, and so was she obviously. So I've gone in with that, and then I'm going in with my Makeup Forever HD foundation. The colour is down below, and I love this. I love this combination, just looked absolutely amazing. Seriously, this girl got so many compliments on the day. There were the makeup artists there and things like that, and just in reality she just looked absolutely stunning, and the pictures show you that as well. So again, I'm going to apply this with a brush all over, and as I'm applying it, it's basically blending out the Kryolan for me as well a little bit. So मैंने क्रायलॉन की पेंट स्टिक इस्तेमाल की है, उसको काफ़ी हेवली से मैंने लगाया, एंड देन मेकअप फॉरएवर की जो HD फाउंडेशन है वो इस्तेमाल किया. अब ये जो कॉम्बिनेशन थी ना, ये बहुत ही नाइस कॉम्बिनेशन थी. मैं आपने देखा है कि मैं हमेशा 2 फाउंडेशन ऐसे कंबाइन करके लगाती हूँ, एंड इसका जो एक्चुअल लुक आ रहा था ना दिन को as well, जो लाइक सामने आ रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी. अब मैंने ब्रश से अप्लाई किया. जब मैं ब्रश से ऐसे अप्लाई करती हूँ ना, तो साथ साथ जो क्रायलॉन होती है वो साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड हो रही होती है. अब मैंने गर्दन के पे लगाई है. इसके टैटूज़ थे बाय द वे, ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा होगा, तो लेकिन मेरा मकसद नहीं था कि टैटूज़ को सही तरह कवर करूँ, इसलिए मैंने लगाई है, लेकिन इतनी ज़्यादा हैविली नहीं लगाई कि टैटूज़ कवर हो जाए, तो वो नज़र आ रहे हैं, तो आई वॉज़ फाइन विद दैट. तो फिर मैं ऑब्वियसली पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूँगी. इतना हैवी जब आपने बेस करना है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी मेरी मॉडल आती है मैं हैवी करूँगी, और यू नो फिर सब मुझे बोलते कि इतना हैवी वो लगता नहीं है. एंड यही ऐसे ही आपका बेस होना चाहिए. हालांकि मैंने इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप देखेंगे कितने मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी देखने में बेस जो है ना किकी नहीं लगता, हैवी नहीं लगता, और वो ये सारे जो स्टेप्स मैं करती हूँ ना उसकी वजह से ऐसे नहीं लगता. अगर ये जो जैसे जो स्किन प्रेप मैंने की है, जो बीच में अभी मैं सेटिंग आपको साथ साथ दिखाऊंगी, अगर मैं ये स्टेप्स नहीं करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा केकी मेरा मेकअप लग सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, हैविली यूज़ कर रही हूँ, कम प्रोडक्ट नहीं यूज़ करी. लेकिन इसके फिर जो फ़ोटोज़ होंगे, वीडियोज़ होंगी, सारा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप होगा, तो वो ऑब्वियसली एक ब्राइड के लिए ज़रूरी होती है. So now I'm using my damp beauty blender, and I'm tapping away the foundation. Now what I'm trying to explain is basically, I always, whenever my model comes in, I'll be like, you know, I'm going to do a full-on makeup, and it's going to be really, really heavy. And once I've done it, they always say to me, it doesn't look heavy, it doesn't look cakey. And that's what I love about all the steps that I do, is how we get to that point, basically. If you don't do the skin prep, if you don't do all the process that I'm doing, which I really want to show you in this video, each step that I've done, then your makeup can look really heavy, can look cakey, and which is never a good look, you know. So when you look at, if I look at my bride and she looks really dry and caked up with makeup and dry patches, then I haven't really done a good job, because
I should have applied it differently. But every time I've done a really heavy makeup, I mean, you can see I'm layering on this makeup, I'm going in really, you know, heavily with the foundation and things like that. But it makes such a difference when you've prepped your skin right and all the in-between stages, and that will give you long-lasting flawless makeup that's going to last my bride the whole day, and you know, it doesn't look cakey at all. So anyway, I've blended away for a good 6-7 minutes and really blended that foundation away, and now I'm going in with my concealer, which is the concealer from Too Faced. Okay, and this is in the shade Vanilla. So I'm adding this on, I'm adding quite a bit on, I'm going all the way underneath the eyes. I'm not putting it on like they show on TikTok and things like that, but I prefer to do it like this. So I'm putting this in all the places I want to highlight. And then I'm gonna do the contouring. So for the contouring, I use the palette from Makeup Forever again. Now the Makeup Forever palette that was a foundation, and I've not drawn on my lines. I did last time as well, I showed you where I just like to blend out with the brush, and that gives me a nicer, softer blend. So I love blending out like that. So यहाँ पे मैंने अभी हाइलाइटिंग की है, ये टू फेस का कंसीलर इस्तेमाल किया वनीला में, जहाँ जहाँ पे मुझे चाहिए वहाँ पे मैंने लगा दिया। अभी ये थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके, ये वो पैलेट है मेकअप फॉरएवर का, ये HD फाउंडेशन है बेसिकली। सो फाउंडेशन से मैं ये थोड़ी सी कॉन्टोरिंग करी हूँ, लेकिन ब्रश पे ही ये प्रोडक्ट लेके उसके वहाँ पे मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे मुझे चाहिए। सो ये जो प्रोडक्ट है, आपने इसको हल्के हाथ से आपने ब्लेंडिंग करनी है, एंड ऊपर साइड्स पे पूरे फेस को आपने फ्रेम करना है, मतलब ना कि अच्छी उसकी कॉन्टोरिंग आए। मुझे हैवी कॉन्टोरिंग नहीं पसंद, मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ, वो जो हैवी एक जो लाइन सी होती है, आई डोंट लाइक दैट। तो मैं हमेशा अपनी कॉन्टोरिंग थोड़ी सी ब्लेंड करके करती हूँ। So you can see I'm just using a smaller brush, and what I'm doing is adding in on the points that I need to add on the contour, and then what I'm doing is just slowly buffing that out as I do, pulling it forward as well a little bit as I need to, but taking it upwards towards the temples. The contour should never just start from the ears and come back down again, and it should never just be a really straight line. I know a lot of people like that, but it's just not something I like. So obviously take from the video what you want to. You can, you know, make it harsh if you want to, that's completely up to you as well. So I'm going around the forehead, I'm going around the jawline, and I'm really blending this product out nicely. And this palette, seriously, this is another one that I would suggest to get. I absolutely have fallen in love with this product. You'll probably see me using this in every video I put up now, because I really do like this. It's amazing. I really love it, and I really like the blushes as well. You'll see me using the blushes in a bit as well. So you really need to take your time when you do this bit. So you're really going to blend this out and buff all the areas out. I mean, you can see already how amazing her skin is looking. She just was glowing. So the nose, I'm just using a slightly smaller brush, same product, and I'm just coming down the side of the nose, and then I'm pulling it downward to the sides of the nose, and then I'm going to use my concealer to blend this out. So एक छोटा ब्रश लिया, और यहाँ पे मैंने वही प्रोडक्ट से मैं नोज़ की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, साइड्स ऑफ द नोज़ पे करके, एंड देन जो साइड्स पे है ना, उस प्रोडक्ट को साइड्स पे नीचे ले जाती हूँ, एंड देन जो कंसीलर करूँगी स्लाइटली टैपिंग मोशन से, तो वो बीच में थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। उसकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। I mean, जो हमने स्किन प्रेप वगैरह की थी ना, उसकी वजह से भी एज़ वेल। सो यहाँ पे इसी पैलेट से ये क्रीम ब्लशर है, तो इसको पाउडर से पहले लगा रही हूँ। सो इसको बीच में मैंने अभी ऐड कर लिया। So this is a cream blusher, so I'm not going to use this when I've powdered and stuff like that, because at that point I think it would, you know, wouldn't look right basically, because you've added loads of powders. So I'm adding this on before, and then I'm going to go over this and emphasize it a little bit more with the powder blusher as well. But I'm just adding this on now exactly where I want it, and then when I blend everything out, it's all going to be blended a bit more. So again, I'm just using a small brush, a fluffy brush, and I'm just adding that on. So now I just wanted to blend everything out, and I'm spraying this with the MAC Fix Plus. So this is just gonna, it doesn't necessarily set everything. I sometimes use this, and sometimes I use the Professional one, setting spray, which I absolutely love. I spray that a little bit closer, by the way, because it sprays really finely. But this just makes everything blend easily as well, and as you're blending away, it really sets everything nicely. So it's not a setting spray though, so just bearing in mind, when I say set, it kind of like just gives you that hydration that you need when you're blending all these products out. So nothing's been dried now. So I'm starting off with the sides of the face, and I'm just blending out underneath the contour line, and I'm going to emphasize that a little bit.
सो मैक का फिक्स प्लस मैंने यूज़ किया है। इसकी वजह से जब मैं यहाँ पे मैं सेटिंग स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। कई दफ़ा वो मैं करती हूँ, इस दफ़ा मैक फिक्स प्लस किया है। इससे जो ब्लेंडिंग अभी होगी ना वो अच्छी ज़्यादा होगी। सो अभी जो मैं अंडर द आइज़ एवरीवेयर वो ब्लेंडिंग करूँगी एंड एक ब्रश से कर रही हूँ। एंड ये रियल टेक्निक्स का ब्रश है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। I'm using the Real Techniques brushes. A small, I think this might be a powder brush possibly, or concealer foundation. I'm not quite sure. Again, I'm so sorry. I do need to get these the brushes for you as well. But I love using this underneath the eyes. Now, instead of going in straight with the beauty blend, I've gone in with this brush and I love the effect it gives me. So what I'm doing is I'm just pressing it down. You can see I'm tapping away and the extra product I'm wiping off on the back of my hand. And I keep doing this, You take your time here. You really want to take your time when you're doing this bit. Just blend away. You want that product to melt into the skin, not be too wet, and then you obviously go in with powder. So just make sure you take your time. So यहाँ पे मैंने इसी ब्रश से मैंने ब्लेंडिंग की अभी अंडर आइज पे। इस ब्रश से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ब्यूटी ब्लेंडर पहले इस्तेमाल करती थी, लेकिन अभी मैं इस ब्रश से ज़्यादा करती हूँ एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर बाद में यूज़ करती हूँ लास्ट मिनट में। लेकिन यहाँ पे आपने बहुत टाइम लगा के इसको ब्लेंड करना है। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है मैं अपने हाथ पे ऊपर वाइप किए जा रही हूँ, लेकिन आपको टैप कर करके उसी जगह पे आपने उस टैपिंग करनी है एंड इसकी ब्लेंडिंग करनी है। यहाँ पे आपको कंसीलर मत आपको थोड़ा सा ड्राई नज़र आना चाहिए, वेट नहीं नज़र आना चाहिए। तब आपको पता है कि आप उसकी ब्लेंडिंग सही होगी। सो आप देख सकते हैं कि मैं काफ़ी टाइम लगा के इसको आराम से कर रही हूँ। ब्राइड को बोल रही, ब्राइड बस ऊपर देख रही है कि क्रीसिंग वगैरह ना हो। So I'm really taking my time here and making sure that everything's blended out. Just using you can use a finger or a small brush just to get into those inner corners as well, because it looks really bad sometimes if you've got like a dark patch there. Just down the center of the nose as well, I'm just tapping it on, and this is going to blend out the contour for me. So while everything is, I've not set it with powder now. Normally I set it with powder and then I go in with under the eyes, but I've done it the other way around this time because I found it easier. So I've just gone in with a very light brown and I'm just buffing out underneath the eyeliner now, so very close to the eyes, and I'm just blending this outwards. सो यहाँ पे अभी पाउडर मैंने नहीं लगाया, बस आइज़ के नीचे जो आपने आई शेडो लगाना है वो मैंने एक ही कलर यूज़ किया। ये जो पहला कलर आइज़ पे यूज़ किया था वो ही आइज़ के नीचे इस्तेमाल कर रही हूँ, एंड इसको बाद में फिर मैं ज़्यादा ब्लेंड कर सकती हूँ। वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, प्लीज़ इनको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, एंड प्लीज़ कमेंट लिख देना मेरे लिए, मुझे पता चले कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी हैं। तो इनकी जो भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई एडवाइस चाहिए आप लिख सकते हैं। So I've just cleaned that up a little bit and now I'm going to go in for my powder. So I'm just using a slightly darker colour on the outer corners just to add in a little bit of depth, just on the outer corners. So if you're liking these videos, if this is helpful, please do subscribe to my channel because I've got lots of new content coming for you guys. I'm working really hard. So it would be nice if I get a like on the video and a comment, and you can let me know what you think, and then it just keeps me going for the next video as well. I'm really trying my best to show you everything. There's nothing that I'm cutting out. This is not edited. You can just see everything that I'm doing, and I'm trying to explain to the best of my ability of what I'm doing and why I'm doing it. Obviously face shapes change, your skin things, they all make a difference to what your actual look is going to be like. But if you just practice and things like that, if you're new to this, you will be able to follow these techniques and create bridal bases and things like that are really long lasting and flawless. I'm just finishing off the eyes here, just making sure I've blended everything out before I actually start doing the powder. So I'm just defining the eyes here now with just a bit of gel eyeliner now. So यहाँ पे थोड़ा सा gel eyeliner लगा रही हूँ, not a lot, कि वो थोड़ा सा डिफाइन हो जाए, क्योंकि पेंसिल हमेशा चली जाती है। सो हमेशा मैं पहले थोड़ी सी पेंसिल लगा देती हूँ, फिर दोबारा जेल आईलाइनर फाइनली लगा देती हूँ।
So now that I've done all the work I wanted to do under the eyes, what I'm doing is just finally going back in with my concealer again, just a very small amount here. You don't even have to add any if you don't want to. I'm just patting away and making sure there's no creases, and then I'm going to set this with powder. So at this point I actually get my model to keep looking up. If she looks down and things like that, or smiling a lot, then it actually does end up creasing. So just before I powder, I always spray. So I'm using my Professional setting spray. This is from Benefit and I absolutely love this spray. I think it just makes such a difference. So I spray it quite closely because it's a very fine mist, so I make sure it goes all over the face, and then I'm tapping it in with my brush. So सेटिंग स्प्रे इस्तेमाल किया है, बेनिफिट का है प्रोफेशनल, ये सेटिंग स्प्रे है। तो पाउडर से पहले मैंने इसको स्प्रे कर दिया है एंड अपने ब्रश के साथ इसको पैट कर रही हूँ कि ये स्किन के अंदर चला जाए, एंड दिस हेल्प्स विद सेटिंग योर मेकअप, एंड इससे आपका बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस बेस भी आ जाता है एंड लॉन्ग लास्टिंग आ जाता है। सो नेक्स्ट मैं पाउडर इस्तेमाल करूँगी। सो इधर मैंने पाउडर पफ से लिया है, हडा ब्यूटी का पाउंड केक पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, एंड इसको टैपिंग मोशन से, अब यहाँ पे मैंने ज़्यादा पाउडर नहीं लगाया, कई दफ़ा मैं ज़्यादा लगा देती हूँ, कई दफ़ा कम करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने कम पाउडर इस्तेमाल किया एंड उसको पैट कर रही हूँ जब तक वो सारा अब्जॉर्ब नहीं हो जाता स्किन में। सो जिधर जिधर मुझे पाउडर चाहिए मैं इनिशियली अभी इसको बस लगाई जा रही हूँ एंड पैट कर रही हूँ। So I'm using a powder puff and I've used the Huda Beauty Pound Cake loose powder. I'm using a powder puff. Now it depends on your powder puffs, to be honest with you they vary. In another video you'll see that I've actually really packed on the powder, but here I've actually taken a small amount of powder and I'm just tapping it on, and I keep tapping away until it completely gets absorbed and you can't see it anymore. So in all the areas that I need it, I'm patting it on, and then after that I'm going to do a little bit of baking, and that powder for me is for baking, but it's also just for a little bit more work that I want to do under the eyes as well, so just to catch the fallout as well. So this technique actually really helps me a lot in getting a flawless base, using the powder puff and adding on your powder. So I would never bake straight away, so I wouldn't put on loads of powder and then leave it there, or not I always basically, you know, pat it away until it's gone and then I add extra powder. So that's what I'm doing here. तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा पाउडर अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मैं थोड़ी बहुत बेकिंग भी कर रही हूँ, एंड जो अंडर आइज पे थोड़ा सी और ब्लेंडिंग चाहिए वो मैंने करनी है। सो ये अंडर आइज कर रही हूँ एंड जो लाइन को थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर देने के लिए वहाँ पे ऐड कर दूँगी, एज वेल बाद में उसका इफेक्ट अच्छा आ जाता है। So underneath the jawline as well I'm adding a line of powder, so when I brush this away it gives you a really nice effect. So you don't have to go too harsh with your contour, but when you add this method in as well, this technique, then what it does is it just sharpens that for you a little bit without it looking too overpowering. So then I'm just going in with a little bit of powder contour now. So this is my MAC Studio Fix that I'm using, and I'm keeping this mainly to the outer edges of the face, and I'm just adding this in for a little bit more depth here. So MAC का Studio Fix इस्तेमाल कर रही हूँ, NC45 था मेरा ख्याल, एंड आउटर कॉर्नर्स पे जो है आउटर एरिया जो फेस का है वहाँ पे कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, जो लाइन पे कर रही हूँ, बस थोड़ी सी और डेफिनेशन दे रही हूँ। फिर भी काफ़ी ज़्यादा इसको आपने ब्लेंड करना है, लाइक एक हार्श लाइन नहीं रहनी चाहिए। And same with the nose, I'm just using a slightly smaller brush now, same powder, and I'm just defining the nose contour. So I do this quite lightly, I bring it down, and then when I actually blend away my powder, the extra powder I've got there, that will help me define and also just blur out those harsh lines as well. So powder contour small brush से कर रही हूँ obviously अभी nose पे, and then जो extra powder है जब उसको मैं blend कर दूँगी, फिर जो harsh edges है वो भी चली जाएंगी। Down the center of the nose you can use a small brush, but I've just used the tip of my beauty blender which has like a straight edge, and I've just added a little bit of powder there as well. So under the eyes I'm just going to blend away now. So basically I added the very first colour that I added actually on the top of the eyes. I'm just using that and I'm blending it out quite low now because I just wanted that very soft. I wanted like a little bit of
smokiness on the outer corners, but majority of it I just wanted like a soft look. So what I'm using is a slightly fluffier brush, and I'm bringing it down now a little bit more than I did before. So यहाँ पे मैंने बस एक फ्लफी ब्रश लिया, जो पहला कलर इस्तेमाल किया था आइज़ के ऊपर, वो अंडर द आइज़ अभी लगा दिया and इसकी ब्लेंड कर रही हूँ. And I always kind of like tend to pull it out a little bit from the sides. Here you can see what I'm doing. I'm just blending out those harsh edges. It just looks really bad when you've kind of like added a product and then you've not blended it out properly. So I always kind of like pull it out a little bit. So now I'm using the Glow Wish powders from Huda Beauty. So this is a new product. I've not used it before. I wanted to use this in the same way normally I would use my MAC Studio Fix powders here. So I wanted to see what this the effect is if I use these. Now I really liked it. I'm using, I think there were two colours, fair and medium. So I'm using those. I did really like it. Just under the eyes, I did feel that there was a little bit, it was a little bit powdery. You can't tell in the video and you won't be able to tell in the pictures and things like that. But obviously I like to be honest with you and telling you what I could actually see physically when I was stood there. But the model did already tell me that her eyes do get a little bit dry underneath. But even though we've done all the skin prep and things like that, it was slightly on the dry side for me. But I do need to use this a few more times to see whether it's the powder or whether it was just my model skin and things like that. But it did give an absolute flawless look. And under the eyes, the way I blend it away, I just use the powder. And what I do is I actually press in under the eye. So I'm not actually sweeping under the eyes at this point. I press the powder that's already there, I'm pressing it into the skin, and then I'm just buffing it out a little bit. Okay, so that makes a big difference as well. So don't sweep, you want to press that powder back in again. तो यहाँ पे मैंने हडा ब्यूटी का पाउडर इस्तेमाल किया था. ये नया है, पहली दफ़ा यूज़ किया है, अच्छा लगा है मुझे. नॉर्मली मैं यहाँ पे अपना मैक स्टूडियो फिक्स का पाउडर इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ये इस्तेमाल किया था. थोड़ा सा मुझे लगा था कि आइज़ के नीचे थोड़ा सा मुझे ड्राई लगा था. वीडियो पे नहीं पता चल रहा, लेकिन ऑब्वियसली मैं आप लोगों को हमेशा सही तरह बताती हूँ कि असल में जब मैं सामने खड़ी हुई थी थोड़ा सा हल्का सा मुझे ड्राई लगा था, लेकिन जब मैंने स्प्रे किया था बाद में फिर ठीक लग रहा था. सो आई डोंट नो कि स्किन की वजह से थी या अगर प्रोडक्ट ऐसे है, लेकिन वैसे इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी. सो एक दो दफ़ा और इस्तेमाल करूँगी, देखूँगी कि प्रोडक्ट है या ऑब्वियसली बस कुछ स्किन पे ऐसे है. सो मैंने इसको प्रेस करके इसको ब्लेंड किया. आप नोट करना कि आइज़ के नीचे मैंने इसको स्वीप नहीं किया था, मैंने उसी पाउडर को स्किन के अंदर प्रेस करके तो इसको ब्लेंड किया. फिर मैंने मैक फिक्स प्लस स्प्रे कर दिया, काफ़ी ज़्यादा स्प्रे किया. So I've added my MAC Fix Plus now, so I really wanted to hydrate the skin because obviously I've powdered a lot, there's a lot of product there now, and then I really spray quite a lot and then let it dry a little bit, and then I go in with my highlighter. So I'm going in with my highlighter from Pat McGrath. It's the trio that I've used a few times now, which I absolutely love. So I'm using this highlighter today, and then I went in with a little bit of blush, which was Dior blush in Coral, which wasn't actually mine, it was my friend's. So I just thought I'd use it and see what I thought, and it was really pretty. So I always kind of like going with my highlighter first, then my blusher, and try and blend everything out. Otherwise your highlighter just kind of like sits there on top of your blusher. So even if you did it the other way around, you must go back in and blend this out. So highlighter इस्तेमाल कर रही हूँ, पैट मैकग्राथ का है, एंड देन मैंने डियो का एक ब्लश इस्तेमाल किया है कोरल में. वो मेरा अपना नहीं था, मेरी फ्रेंड साथ में थी, तो उसका मैंने सोचा चलो इस्तेमाल कर लेती हूँ कैसे लगता है. तो इट वाज वेरी नाइस. है थोड़ा सा महंगा, लेकिन इट वाज वेरी नाइस. लेकिन आई डोंट थिंक ब्लश पे मैं इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगाती, क्योंकि आई थिंक ब्लश आप थोड़ा सा चीप वाला भी यूज़ कर सकते हो तो सही आ जाता है. लाइक मैक का मुझे ब्लशेस ज़्यादा पसंद है. तो यहाँ पे मैंने ब्लश लगा दिया थोड़ी सी, उसकी हमेशा मैं ब्लेंडिंग कर देती हूँ क्योंकि नहीं तो ओवर लगता है. एंड एक और दफ़ा स्प्रे कर रही हूँ. सो आप देख लें कि कितनी दफ़ा मैं स्प्रे कर रही हूँ बीच में, मतलब एक ही चीज़ नहीं होती, नहीं तो इसलिए आपका मेकअप ना ड्राई ज़्यादा लग सकता है. सो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ ये जो मेरी सेटिंग स्प्रेज होते हैं या मैक का फिक्स प्लस जो होता है, उससे हाइड्रेशन वापस आ जाती है. So you can see I've sprayed her face again. So these are the techniques and these are the things that make a difference to your makeup and make sure that it's not cakey and things like that. So it just makes a difference, all these little steps. And you don't get to see these steps in a lot of videos.
So if you're just purely looking at the makeup and you're watching a tutorial and you follow it A to Z, you may obviously not have seen all the steps, and that's why this video is quite long, but I just wanted to go through everything and just really be able to let you guys know exactly what steps I've taken. I've not shown the full step as in, you know, how long it took me, but I've tried to show you every single step that I've done in between just so you can see what I've done. So I used two lipsticks here. I used the Maybelline Superstay, which was a darker colour, so we outlined her lips first, and then I'm using the slightly orangey red lipstick in the middle of her lips, and then what we're doing is it's just really blending it outwards as well. So it's slightly dark on the outside, and then it's you've got this really pretty colour on the inside of the lips as well, and it just looked absolutely stunning. I think sometimes if you have a dark red lip, it can look a bit garish occasionally, so you just have to brighten it up sometimes. So लिपस्टिक हमने दो इस्तेमाल की थी, एक मेबलिन की है जो डार्क कलर था, पहले मैंने पूरे लिप्स पे लगा दिया था, एंड देन सेंटर में मैंने ये रेड ऑरेंजी सी लिपस्टिक लगाई है टू फेस की, एंड इसको सही तरह इसको ब्लेंड करके लगा दिया. सो असल में थोड़ा सा आउटर एजेस थोड़ी सी डार्क थी, एंड बीच में ओबियसली ये लिपस्टिक कलर थी, एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह. Then I'm doing the mascara again. I kind of put my finger there and I'm really running through the mascara through the natural lashes and the lash that we've added on as well. So this just makes sure right at the end basically that everything is you know is joined together and you haven't got that separation. Just adding a little bit of highlighter into the inner corners of the eyes as well. I mean, you can see how flawless she looks, mashallah. Right, so right at the end, I've always said this to you, I always kind of like top up on a few things, normally the eyeliner and especially things like glitters and stuff. So I'm just giving her one final coat of the glitter right in the center of the eyes to give her that pop. So end पे हमेशा मैं eyeliner सही करती हूँ, यानी glitter अगर मैंने ऐड करनी होती है, glitter मैंने यहाँ पे लगा दिया, सिर्फ सेंटर में लगाए वो एक पॉप आ जाता है glitter का and shine का. So बस थोड़ा सा वो कर दिया था, and then eyeliner से बस बेस पे उसको एक थोड़ी सी एक very thin line eyeliner कर दे रही हूँ, and जो eyelashes कई दफ़ा गंदी हो जाती है with glitter या कुछ भी अगर लगा हुआ है उसको मैं clean कर देती हूँ. So I'm using the eyeliner from NARS, just a liquid eyeliner. So all I'm doing is giving a slight base eyeliner. I'm not giving her a really full pulled out wing or anything like that. And then what I also do is clean up the lashes with this as well. So if there's any glitter there or a little bit of eyeshadow or anything, I just kind of like use a tip and wipe that away as well. And then it looks nice and neat and finished. So this was pretty much the makeup. I thought I'd just show you everything today. I know it's been long, I'm sorry, but hopefully you've enjoyed the video and picked up a few things. I will have the hair tutorial for you soon as well. I hope आपको ये पसंद आया. ये फाइनल लुक था. पिक्चर्स वीडियोस इंस्टाग्राम वगैरह पे हैं, अगर आपने वहाँ पे भी देखनी है. इंशाल्लाह इसका हेयर ट्यूटोरियल, ज्वेलरी सेटिंग वो भी लेके आ रही हूँ. एंड आई नो लॉन्ग था ट्यूटोरियल, लेकिन आई होप आपको पसंद आया. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.